Hello viewers, welcome to my channel. I am Poonam Dua from MND Education Academy of Literature, and we are bringing to you few important biographies that will be important for MA entrance, UGC NET aspirants or any other competitive exam aspirant of English literature. Please do not forget to share and subscribe the channel to remain updated with our information. So we are glad to start the biography section with the biography of Jane Austen, one of the best known and you can say most widely read novelist in the English language, and her novels are the subject of intense scholarly study and the center of a diverse fan culture. शुरुआत करते हैं जेन ऑस्टन के इंट्रोडक्शन से. शी वॉज बॉर्न ऑन 16 दिसंबर 1775 एंड डाइड 18 जुलाई 1817. फेमस राइटर्स के बर्थ और डेथ डेट्स याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको बहुत बार क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग दी एरा ऑफ दैट पर्टिकुलर राइटर. सो प्लीज़ try to remember as much as possible. Jane Austen was an English novelist known primarily for her 6 major novels, and we will discuss each novel in short in this video. I'm telling you these major 6 novels in chronological order: Sense and Sensibility 1811, Pride and Prejudice 1813, Mansfield Park 1814, Emma 1815, Persuasion and Northanger Abbey both 1817. Please make a note of each and everything that you are studying. It will be extremely useful for your exams. Start करते हैं Sense and Sensibility से. Sense and Sensibility is a novel by Jane Austen published in 1811 as I told, and initially it was published anonymously by a lady appears on the title page. You can see here. सेंस एंड सेंसिबिलिटी की प्रोटैगनिस्ट दो सिस्टर्स हैं, एलिनोर एंड मैरियन. एलिनोर एंड मैरियन आर द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. इन फैक्ट जेन ऑस्टन had originally entitled the novel as Eleanor and Marian, since the novel mostly deals with the life of these sisters, these girls only, but later she revised the novel and changed its title to Sense and Sensibility based on the qualities, characteristics of her heroines. नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस पर. मे बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉवल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. एवरीबडी मस्ट हैव रेड अबाउट इट और हर्ड अबाउट इट एटलीस्ट. प्राइड एंड प्रेजुडिस का ही एक वीडियो भी है मेरा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, जिसमें पूरी स्टोरी बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब्ड है. प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ रोमांटिक नॉवल ऑफ मैनर्स written by Jane Austen in 1813, and the novel follows the character development of Elizabeth Bennet, and Darcy's character actually journeys the Pride and Prejudice whole graph. अब बात करते हैं एक बॉलीवुड फिल्म की जो कि इस नॉवल पर बेस्ड है, ब्राइड एंड प्रेजुडिस. ब्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ 2004 रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय गुरिंदर चड्ढा, एंड द स्क्रीन प्ले बाय गुरिंदर चड्ढा itself is a Bollywood style adaptation of Jane Austen's 1813 novel प्राइड एंड प्रेजुडिस. बढ़ते हैं अगले नॉवल की तरफ, मैंसफील्ड पार्क. मैंसफील्ड पार्क इज द थर्ड पब्लिश्ड नॉवल बाय जेन ऑस्टन, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1814 बाय थॉमस एगर्टन, एंड अ सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1816 बाय जॉन मुरे. प्रोटैगनिस्ट, इस नावल की प्रोटैगनिस्ट का नाम है फेनी प्राइस, और इसमें और भी कई कैरेक्टर्स हैं जैसे कि सर थॉमस बर्ट्रम, अ वेल्दी लैंड ऑनर एंड अंकल ऑफ फैनी, लेडी बर्ट्रम, फेनीज आंट एंड वाइफ ऑफ सर थॉमस बर्ट्रम. नेक्स्ट नॉवल की बात करते हैं, एमा. एमा बाय जेन ऑस्टन इज़ ए नॉवल अबाउट यूथ एंड रोमांटिक मिसअंडरस्टैंडिंग्स ड्यूरिंग दैट यूथ. Published on 23rd December 1815, and the protagonists are Emma Woodhouse and George Knightley. It is set in a village in England, Highbury, and this shows the setting of early 19th century, and the novel centers on Emma Woodhouse. Emma Woodhouse feels like she is a very good matchmaker, and throughout the novel she is busy with making match of her with his and his with her. तो पूरे नावल में एमा को ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर बहुत ही एक्सेप्शनल मैच मेकिंग एबिलिटीज़ हैं, एंड
this misconception of her actually turns out in all the romantic misadventure of the novel. Let's talk again about a Bollywood movie based upon this novel, Emma Aisha. Aisha is a 2010 Indian romantic comedy drama film based upon this famous novel adaptation of Jane Austen's 1815 novel, Emma. अब बात करते हैं परसुएशन की. परसुएशन इज द लास्ट नॉवेल fully completed by Jane Austen and it was published at the end of 1817, 6 months after her death. The story concerns Annie Elliot, a young English woman of 27 years whose family is moving to lower their expenses and get out of loans. They rent their home to an admiral and his wife. परसुएशन की सेटिंग एक बहुत ही फेमस टाउन में है, दैट इज स्पा टाउन इन इंग्लैंड. अब बात करते हैं नॉर्थएंगर एबे की. नॉर्थएंगर एबे इज अ coming of age novel and a satire of Gothic novels. It was completed for publication in 1803, making it the first of Austen's novel in order of completion, but could be published posthumously in 1817 with another novel, Persuasion, that I just talked about. Northanger Abbey की भी setting Spa Town की है. Spa Town is the primary location of this novel. बात करते हैं जेन ऑस्टन के नॉट सो फेमस नॉवेल्स की. लेडी सुजैन सबसे पहले आता है इस कैटेगरी में. लेडी सुजैन इज़ अ शॉर्ट एपिस्लरी नॉवल. एपिस्लरी नॉवल उन नॉवेल्स को बोला जाता है जो कि लेटर की फॉर्म में होते हैं. एक कैरेक्टर ने किसी और कैरेक्टर को कुछ लेटर्स लिखे और वो लेटर्स रीडर्स तक पहुंचते हैं और लेटर्स के थ्रू स्टोरी रीडर्स तक पहुंचती है. दैट इज़ कॉल्ड एपिस्लरी नॉवेल्स. सो इट इज़ एन एपिस्लरी नॉवल रिटन बाय जेन ऑस्टन, पॉसिबली रिटन इन 1794 बट could not be published until 1871. Next, let us talk about Sedition. Sedition is an unfinished novel by the writer Jane Austen. In January 1817, she began to work on a new novel called The Brothers, and later on she titled it Sedition and completed only 11 chapters before stopping the work in mid-March 1817, probably because her health was deteriorating. Next, The Watsons. The Watsons is an abundant novel by Jane Austen, probably begun about 1803. Jane Austen began working on an untitled novel around 1803 when she was living in Bath. Bath is a place in England, and probably abandoned it after her father's death in January 1805. It had no formal chapter divisions and was approximately 7,500 words long at that point of time, and the fragment was given the title of The Watsons and published in 1871 by the nephew of Jane Austen, James Edward Austen Leigh, in the revised and augmented edition of his Memoir of Jane Austen. Such a beautiful, such a talented writer died at the early age of 41. This is sad. In 1816, at the age of 41, she started to become ill with what some say might have been Addison's disease. And at some point, Austen's condition deteriorated to such an extent, such a degree, that she stopped writing. She ceased writing, and she died on July 18, 1817 in Winchester, Hampshire, England. इस पार्ट में से आपने क्या ग्रैब किया है वो जानने के लिए ज़रूर देखिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जिसमें आपको जेन ऑस्टन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs जानने को मिलेंगे. प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.